Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 29th April 2023. In editorial we are going to discuss a very important issue, that is Women's Reservation Bill. Okay, so we will discuss the Women's Reservation Bill, which is important, and then we will also discuss Article 200 and Article 163 of the Constitution of India, which is related with the relationship between governor and Council of Ministers, that is Article 163, and Article 200 about the when the bill is presented to the governor, the options the governor has, and the Supreme Court observation on that. So these two things are very important. So before moving to that, let's have the news from the front pages. The first is coming from the Shanghai Cooperation Organization, that is, we should fix accountability on supporters of terrorism. Rajnath tells SCO members. तो यहाँ पे जो SCO है इसका जो फुल फॉर्म है, it is Shanghai Cooperation Organization, okay, which is the secretariat is in Beijing in China. It is the organization which focuses on security and economic development of Central Asia and Eurasian countries. Now, for 2023, the host of SCO Summit is India. So currently, before the head of the state summit takes place, the defense ministry's meet is going on. Yesterday, we read about the meeting between Defense Minister of India and Defense Minister of China, where they have said that peace at border is important prerequisite for development of relationship in other sectors. Now in this Shanghai Cooperation Organizations, where Defense Minister of India has highlighted to root out terrorism collectively and fix accountability on its supporters. That is very important. Okay, so if you will see यहाँ पे जो टेररिज्म की बात हो रही है, सो इफ यू विल सी दैट इसमें एक पाकिस्तान इंडिया एंगल इन्वॉल्व होता ही है, ठीक है. दूसरा जो है जो सेकंड जो है कि अफगानिस्तान शुड नॉट बिकम अ हेवन फॉर other terrorist groups like Al-Qaeda and ISIS. Okay, then some other important things which has been highlighted over here is that in a statement on bilateral talks between Chinese Defense Minister Li Shangfu, तो यहाँ पे देखिए ये नाम important हो जाता है, Li Shangfu. So he is the Defense Minister of China and the Defense Minister of Russia is Sergei Shoigu. So यहाँ पर आप देखेंगे that China, the two countries have shared far more common interest than differences, and the two sides should take long-term view, place the border issue in an appropriate position in bilateral relation, and promote transition of the broader situation to normalized management. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया चाइना का जो एक border issue है, which this organization which has happened after this meeting has taken place after the 18th commander level talk between India and China at the Chushul-Moldo sector of Chinese side. तो वहाँ पे conclusive result नहीं हुआ. जैसा कि हम जानते हैं कि जो दो लीगेसी इश्यूज हैं वो अभी भी फ्रिक्शन पॉइंट जो है वहाँ पे अभी भी डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं है, दैट इज डेप्सांग एंड डेमचोक. एंड देन पास्ट फ्यू मंथ्स देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट बाय चाइना टू intrude in Yangtze region of Taiwan in Arunachal Pradesh. Now if you will see that India is hosting for the first time since it became a full SCO member in 2017. So जैसा कि मैंने बताया कि इस साल जो SCO समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है. 2017 में दो कंट्रीज SCO के मेंबर्स बने थे, वन इज पाकिस्तान, द नेक्स्ट इज इंडिया. Now in this 2023 we will see Iran becoming the newest member of Shanghai Cooperation Organization. The next is Operation Kaveri. India airlift 754 more stranded citizens from war-torn Sudan. So we already knew that Operation Kaveri India ने launch किया है to airlift its citizens. Around 3000 citizens were there. तो आज एक exact number आया है that as per official estimates, the total number of Indians in Sudan is around 3,400 with around 1,000 persons of Indian origin. Okay, so there are persons of Indian origin in Sudan also who are residing there for generations. Fine. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जो शिफ्ट हो रहा है फोकस, तो पहला जो इवैक्यूएशन था वो वहाँ से हो रहा था खार्तूम से, क्योंकि जो मेन लड़ाई चल रही है दोनों ग्रुप के बीच में सुडान में वो खार्तूम में कॉन्सेंट्रेटेड है. बट नाउ द फोकस इज शिफ्टिंग ऑन अदर पार्ट्स ऑफ सुडान वेयर इंडियंस लिव. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट दिस प्लेसेस आर लाइक अल फशीर इन दारफूर, विच इज नाउ अगेन हाईली वोलेटाइल एट दिस मूवमेंट.
नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस कंट्री के साथ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा है फॉर इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन, दैट इज सऊदी अरेबिया। तो हम पहले से जानते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो C-130J कैरियर एयरक्राफ्ट था, इट वॉज स्टेशन एट जद्दा, and then India has sent till now 3 ships for evacuation. One was INS Sumedha, then the next one was INS Teg, and then INS Tarkash. The next is the core sectors output dipped to 5-month low of 3.6% in March. Now, what is this core sector? तो core sector में इंडिया में total 8 sectors आते हैं, ठीक है। So in these 8 sectors, you have coal, crude oil, natural gas, petroleum refinery products. Okay. Then you have steel, cement, electricity, and fertilizers. These are the 8 core sectors of Indian economy. इनका जो डेटा होता है वो हर महीने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है, और इनका जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, दैट इज अराउंड 40.27%। अब अगर हम कोर सेक्टर डेटा देखें तो कोर सेक्टर ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज जो कोर सेक्टर हम इसको इसके लिए कहते हैं क्योंकि दिस सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट अदर सेक्टर्स डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ दिस 8 कोर सेक्टर्स। अब यहाँ पे जो डेटा आया है मार्च 2023 का, तो इट इज 3.6%, विच हैज स्लिप्ड डाउन फ्रॉम 7.2% इन फरवरी। खास करके सेक्टर्स जिन्होंने जहाँ पे स्लिप हुआ है नंबर्स, दैट आर इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट प्रोडक्शन, ओके, फर्टिलाइजर एंड स्टील, दे आर ग्रोइंग स्लोली। देन वी ऑल्सो सी क्रूड ऑयल में भी जो है वो आउटपुट जो है इट इज फॉलिंग फ्रॉम द 10th सक्सेसिव मंथ। Then natural gas production, it is also witnessing a slow growth of 2.8%. Now, coming to Women's Reservation Bill. Now, Women's Reservation Bill cannot wait any longer. So, if we will see the background of the Women's Reservation Bill, so if we will see that currently the 17th Lok Sabha is going on, and if we will see the participation of women, it is just 14% of the seats. ओके, सो अगर हम वुमेन की हिस्ट्री देखें, दैट वुमेन दे हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, एंड देन इफ यू विल सी दैट दे वर आल्सो न्यूमरस फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। 10 साल पहले 3 स्टेट्स इंडिया के, दैट इज वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, दे वर गवर्न बाय वुमेन चीफ मिनिस्टर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे, देन सुषमा स्वराज, शी वॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। Sonia Gandhi, she served as both president of the Congress Party and chairperson of United Progressive Alliance, and the president of India was also a woman, that is Pratibha Patil. But if you will see that despite this contribution to Indian politics, okay, but the participation of Indian women in politics is very narrow. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि there has been a demand since independence for increasing the political representation of women in India, which we can trace back to 1955 when government appointed committee which recommended that 10% seats in Lok Sabha and state legislative assembly should be reserved for women. Then there was the National Perspective Plan for Women which recommended 30% of seats in all elected bodies to be reserved for women. Then this recommendation also found place in National Policy for Empowerment of Women which was adopted in 2021. Then comes the landmark 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. तो इसमें जो 73rd Constitutional Amendment Act है उसमें 33% of the seats were reserved for women at all level in the Panchayati Raj institutions. Then in 1996, the Women's Reservation Bill was introduced in the Lok Sabha. The bill was proposed to reserve 1/3 of seats, okay, that is 33%. 1/3 of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women. But it has faced strong opposition from various political parties, but it has gained momentum in early 2000. Okay, so March 2010 में this bill was approved by Rajya Sabha also, but still this bill has not been passed. Now, if we try to take some national examples, okay, global examples. So if we will start with the Scandinavian countries. So Scandinavian countries, they have implemented policies and structures that support gender equality and women's empowerment, also women's representation in politics and leadership. Then if we will see
रवांडा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वुमेन आर इन मेजॉरिटी इन देयर पार्लियामेंट. देन नॉर्वे हैज implemented a quota system in 2003 that requires 40% of seats on corporate boards to be occupied by women. Fine. So now we are talking about the Amrit Kal. तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर he has told a very important thing that if we want to measure the degree of progress of any civilization, we should measure the progress of the women. ओके सो यहाँ पे है कि इक्वलिटी कैनॉट वेट एनी लॉन्गर एंड द टाइम फॉर चेंज इज नाउ. वुमेन हैव बीन वेटिंग फॉर टू लॉन्ग फॉर द राइट टू गवर्न, नॉट जस्ट फॉर themselves but for the greater common good. The next is delay in conveying decision on assent to bill is constitutionally impermissible. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमली रिमाइंडर दिया है टू द गवर्नर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट एक्सपेक्ट्स देम टू टेक अ डिसीजन ऑन रिटर्निंग द बिल और गिविंग assent to the bill as soon as possible. फाइन. सो इट हैज सेड कि जब हम आर्टिकल 200 पढ़ेंगे तो यहाँ पे द एक्सप्रेशन as soon as possible it contains significant constitutional content and it must be borne in mind by the authorities. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी दैट द तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन शी इज सिटिंग ऑन वेरियस बिल, okay, neither returning it to the legislature nor giving it the assent. Now let's see about the power. So if you will see over here that the governor's power to withhold assent or return a bill with the message for reconsideration is seen as discretionary. ठीक है, आर्टिकल 200 में. ठीक, प्रॉब्लम क्या है कि कोई टाइम लिमिट वहाँ पे दिया नहीं है कि गवर्नर को कब तक बिल वापस कर देना है, कब तक उसको साइन कर देना है या कब तक उसको प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करना है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. फाइन. तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इसके ऊपर डिबेट हुआ था तो यहाँ पे था कि दैट रिटर्निंग अ बिल वाज टू बी डन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि दैट दिस बिल शुड बी रिकॉल्ड और द सेकेंड थॉट इज नेसेसरी ऑन दैट बिल, सो द गवर्नमेंट कैन एडवाइज द गवर्नर टू सेंड द बिल अगेन टू द legislature. But again the problem is absence of time limit in the article 200. The next is article 163. तो आर्टिकल 163 में क्या है कि दैट गवर्नर विल फंक्शन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट बट देयर आर सर्टेन क्लॉज अबाउट डिस्क्रिशन. कि डिस्क्रिशन क्या है, तो यहाँ पे आर्टिकल 163 जब आप ध्यान से पढ़ेंगे कि गवर्नर विल फंक्शन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, बट इफ गवर्नर को ऐसा लगता है कि कोई डिस्क्रिशन अगर एक्सरसाइज करना है तो वो डिसाइड कौन करेगा, वो गवर्नर खुद डिसाइड करेगा कि वेयर द गवर्नर्स डिस्क्रिशन लाइज. ओके, तो यहाँ पे जो बिल के ऊपर जो मुद्दा है गवर्नर का जो रोल है वो समझा जाता है कि इट इज गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर, सो विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अदर स्टेट्स. द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मूव्स यूनिफाइड एयरपोर्ट सिक्योरिटी अकिन टू TSA इन US. सो यहाँ पे 37th रेजिंग डे ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है जब हुआ, सो सिविल एविएशन सेक्रेटरी जो है राजीव बंसल ही सेड दैट द पार्टिसिपेंट्स एट द 2-day कॉन्फ्रेंस दे मस्ट डेलिब्रेट ओवर मूव टू अ TSA बेस्ड कॉन्सेप्ट अक्रॉस ऑल 148 एयरपोर्ट्स. सो व्हाट इज दिस TSA? तो TSA का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ US. तो ये इट इज़ अ स्पेशल फोर्स इन द US which provides airport security. Now this concept, okay, is going to come in India because at the annual Director General of Police conference, okay, Prime Minister has instructed that the proposal should be finalized for setting up something like on the line of TSA in India also. Okay, so अभी जो देखेंगे कि इंडिया में जो एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं दैट इज डन बाय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. So now currently Central Industrial Security Force is deployed at 66 out of 148 airports to carry out security functions. Then state police oversee security at the remaining ports. The next is register FIRs against hate speeches even without complaints, says the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्टेट्स को कि आप जो है किसी का वेट नहीं करेंगे कि कोई कंप्लेन आके फाइल करे फॉर हेट स्पीच. If you know that hate speech has been made, to file the suo motu complaint. Now in this, if you will see that some of the important things the Supreme Court has highlighted is that it will apply to all speech makers irrespective of their religion. The next is the Supreme Court has also highlighted various provisions in Indian Penal Code which can be invoked to deal with hate speeches.
So these are very important for our exam. One is section 153A, which deals with promoting enmity between different groups on the ground of religion. Then 153B, imputations, assertions prejudicial to national integration. Then section 505, public mischief. Then section 295A, deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings of the Indian Penal Code. Then the bench has also ordered Director Generals of Police in the state to inform their subordinates about the court order so that appropriate action in accordance with the law can be taken at the earliest. Okay. अब अक्टूबर 2022 में कोर्ट ने ऐसा ही कुछ ऑर्डर पास किया था फॉर द इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs अगेंस्ट दोज पीपल whose speech triggers communal violence, जो ऐसा हेट स्पीच करते हैं जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हो सकता है. Now the next is Indian Meteorological Department predicts more heat waves for Eastern India in May. कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि IMD का ही prediction आया था कि this year the monsoon will be 96% of long term average. Okay, it will be 96% of long term average Indian monsoon. अब देखिए नया जो आया हुआ है that is about heat waves. ठीक है, हीट वेव्स मतलब जब नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर होता है उससे 4 डिग्री ज़्यादा, तो हम उसे हीट वेव मानते हैं. सो यहाँ पे देखेंगे कि जो मई है इट इज़ कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया एंड नाउ द IMD predicts that there will be heat waves over Bihar, Jharkhand, Odisha, Gangetic West Bengal, East Uttar Pradesh, coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Telangana and coastal Gujarat. Fine. उसके बाद रेनफॉल के बारे में कहा है कि रेनफॉल इन मे इज लाइकली टू बी नॉर्मल और विद इन अ 10% विंडो ऑफ वॉट यूजुअल फॉर द मंथ. देन द नेक्स्ट इज दैट large parts of eastern India they will experience heat wave, but Delhi, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, okay, they are likely to see increased rain and limited heat waves. Now if you will see about the shortfall of rainfall, तो यहाँ पे जो IMD ने जो बोला है कि shortfall नहीं है, ये normal rainfall है, that is 96% of the long term average. मतलब 100% plus minus 4% को हम normal मानते हैं. तो 100 minus 4 is 96%. तो अगर 96% तक भी अगर रेनफॉल हुआ ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज दैट इज अबाउट 87-88 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, तो हम उसको नॉर्मल मान लेते हैं. बट इस बार जो 100% से नीचे आया है उसके पीछे क्या फैक्टर है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एल नीनो. व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो इट इज अ फिनोमिना ऑफ वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक दैट इज लिंक्ड टू डिमिनिश्ड रेनफॉल इन वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. Now the next is if you will see important news from the foreign affairs. BBC chair quits over links with Boris Johnson role. So British Broadcasting Corporation के जो chairperson है Richard Sharp, he has resigned after an independent inquiry found that he created a potential perceived conflict of interest when he failed to declare that he helped arrange a loan of British pound 8 lakh for UK Prime Minister Boris Johnson in late 2020. तो यहाँ पे नाम इम्पॉर्टेंट है और ये जो इंसिडेंट किसकी वजह से हुआ है दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो BBC चेयरपर्सन रिचार्ड शार्प क्यों रिजाइन किया? फॉर अरेंजिंग लोन फॉर बोरिस जॉनसन हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. द नेक्स्ट इज US wants to de-risk not decouple from China says national security advisor of USA जेक सुलिवैन. सो जेक सुलिवैन ने इन्होंने कहा है कि दैट दे डू नॉट वांट टू डीकपल, मतलब अपना रिलेशन खत्म नहीं करना चाहते, दे जस्ट वांट टू de-risk the risk coming from China. Okay, so यहाँ पे if we will see that they are going to manage this competition of this coming from China. ठीक है, managing the competition, not threatening it, not threatening the China through trade wars and other things. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक important बहुत ही important information है, that is now see. And we are very excited for incoming World Bank President Ajay Banga. Okay, so this is very important. अभी तक मैंने आप लोगों को क्या डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड मैलपास. ओके, डेविड मैलपास. Now who will be the next president? Ajay Banga. So please make a note of it. Okay, the next is Mr. Sullivan. He has called for debt relief for vulnerable countries and called on China, the world's largest official creditor, to step up and play a constructive role in relief for debt-distressed countries.
ये जो है G20 का भी हाईलाइट है। G20 में जो इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के जो कंसर्न्स हाईलाइट करता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो एम्फसाइज है वो है डेब्ट क्राइसिस पे ही है। ओके, सो मैनी कंट्रीज इन इंडियन नेबरहुड्स लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल and then Bangladesh, they are going through debt crisis. Then there are many other developing countries also which are going through debt crisis, okay, because of the Russia-Ukraine crisis, rise in global commodity prices, rise in global crude oil prices. Now from economy, we have one important news, one important, very important appointment. That is the appointment committee of the cabinet approved the appointment of Siddhartha Mohanty, who is currently managing director and interim chairman of LIC, as the chairperson till June 2024. फिर जून 2024 के बाद अब देखिए he will continue as chief executive officer and MD till 2025. So that is the important appointment. So friends, that's all for today. We will meet next week with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.